तो आप so beware with all those surprises. Regarding ultrasound, आप अपनी daily routine practice में would have seen multiple like amazing 3D, 4D imaging and color Doppler and this and that. All those fancy terms they come into your clinics. इसी तरह की reports भी हैं, but the basic principle of ultrasound remains the same. So don't get really impressed by all those fancy terms. Look at this. मैंने इनका नाम काट दिया है, लेकिन ये डॉक्टर साहब हैं और ये सब इंजीनियर भी हैं. तो आप ऐसे लोगों से काइंडली थोड़ा सा एहतियात करें कि ये इस तरह की अगर आप चीज़ देखते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट दैम देन एंड देयर कि ये आपकी प्रैक्टिस ख़राब करेंगे और आपका नाम भी ख़राब हो. एंड यू कैन सी द हैंड रिटन रिपोर्ट, अगर आप पढ़ सकते हो. लिवर इज शी हैज़ नॉर्मल इन साइज, शेप एंड सी. He has written everything and she has normal size, right kidney B, left kidney B, uterus B. Look at the spelling of stomach. Niche. She has some heat in stomach because she has more swelling at this side. TB is confirmed. So beware with all those things कि ये आप बड़े fancy terms के साथ and look at the quality of report. और ये आपके जो precious patients हैं, you send them with the confidence कि जी इस तरह जाएंगे और and they return with this nonsense. And this really can make things more messy कि जी आप इस तरह की confused रहें कि जी क्या चीज़ थी patient को और क्या था. So beware with all those things. It is always better recommended कि अगर liver problems है, you send them to a liver clinic, liver center, specialized center, where things are waiting for them, और एक battery of investigations है, which is always available and services there, कि जिनको आप cater कर सकते हैं. So send them to a specialist center. What do we have in a tertiary care setting, particularly in radiology? We have a range of investigations starting from X-rays to angiographies, so we can always use them at our advantage. Particularly talking of benign liver and malignant lesions. Benign lesions, this line does not cause much of a problem, but this is really, really concerning. If somebody has a malignant lesion, it can be, it can end up in a disaster. So do not waste time and straight away send them to a specialized tertiary care setting. This is an algorithm for an ultrasound operator. If he or she gets something like fishy in ultrasound, so she should follow this flow chart accurately. यह नहीं होना चाहिए कि एक benign lesion आपने देखा and you assumed कि जी ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कोई malignant lesion मिस कर दिया आपने, कुछ किया. The patient, obviously every modality has its own limitations. So you should not sit on it. So sonographer, this is the responsibility of a sonographer to follow this chart accurately. ये एक flow chart है for CT guidance के CT में हम imaging वगैरह में benign versus malignant lesions को कैसे differentiate कर सकते हैं. So you need not to go through it. Hepatic steatosis. I'll come to some common complaints that you usually see in your clinics. Hepatic steatosis, very very common complaint. आप देखते होंगे ज़रूर कि जनाब लोग कढ़ाइयाँ में खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, सिरी पाए खा रहे हैं, and they end up with this thing. जी डॉक्टर साहब वज़न कम नहीं हो रहा हमारा. आप कहते हैं जी अब you've been stressing them, you just cut down your calories, sugar, fat and everything. But they don't listen. They come back to you with always a inch or a centimeter over the average line. So this is how a normal ultrasound look like. आप ये देखें, this greyish thing is all liver. ये देखें बिल्कुल normal homogeneous liver है. This is on ultrasound and this is compared with the right kidney. अगर आप इन दोनों को देखें
ये arrows, they are pointing towards the diaphragm. Look at this edgy diaphragm. Right hepatic vein, पूरा आपको liver अच्छा नजर आ रहा है. And look at the diaphragm. And this black thing is the gallbladder. Just wanted to show you the interface of a normal liver with these adjoining structures. And look at them. Look at the liver has all gone shiny, bright. It's all fatty liver. आप देखें इसका इंटरफेस कितना ज़्यादा हो गया लिवर के साथ. आप यहाँ देखें जो वेसल्स थी बिल्कुल इफेस हो गई. ये देखें डायफ्राम कैसा ऐसे फेंट सा नज़र आ रहा है आपको. So these are all signs of fatty infiltration. And this is a very, very common complaint. आपको ये patients आते होंगे ऐसे. And different sonographers, they might be grading it as grade 1, 2 and 3. So that is an old fashion. अब आपको quantification चाहिए होती है liver की. Is it 25%? Is it 30%? Is it 40%? Yeah, over 50%. So that is really something जो आपको consider करनी चाहिए. Again, densely fatty liver compared with the renal cortex, your right kidney is. Gallstones. Gallstones आपके practice में they are not uncommon. Gallstones are not uncommon. And remember these 5 F's जब हम final year में थे या house job में थे तो हमें ये 5 F's बहुत अच्छे याद होते थे. They still apply और आप अगर इनकी help लेना चाहती हैं तो they are very, very helpful in your clinical practice. All ultrasound pictures, you can see this is a gallbladder. You can see this mulberry edgy gallstone casting this tail. इसको हम acoustic shadowing कहते हैं. Another example, आप ये देखें gallstone, multiple gallstones. ये आपको अक्सर पेशेंट आते होंगे with dyspepsia and flatulence and everything. तो आप इनका अल्ट्रासाउंड करवाएं, you will find them. Chronic cholecystitis, patient complaints of right upper hypochondrial pain, fever, unrest. तो आप cholecystitis बिल्कुल हो सकता है. You can lodging stone at the neck can cause distended gallbladder, collection of debris, multiple stones in the cystic duct, stones in the bile duct. These are all common examples. जब हमने CT किया तो look at this elongated gallbladder, another sign of cholecystitis. Look at these pearls sitting all around in a row. In a gallbladder, these are all gallstones. Cholecystitis, the gallbladder gets thick-walled, causes pericholecystic edema. Gallstones may or may not be present. Doesn't necessarily means कि cholecystitis में gallstones भी होंगे. Acalculous cholecystitis is a surgical emergency. यहाँ आप देखें gallbladder full of debris, infected material. This is all full-blown cholecystitis. यहाँ आप ये देखें stones, notorious stone impacted in the region of neck causing gallbladder distension. Another example, look at this stone. ये cystic duct में lodge हो गया, and this is all distended gallbladder, thick-walled with pericholecystic fluid. CT pictures आप ये देखें gallbladder सारा ऐसे edemas है, face किया हुआ है इसने, distended gallbladder, all fluid and thick-walled debris filled. This was all about the gallbladder. Pancreatitis में stones, their ugly presentation is biliary pancreatitis, जिसको हम APD treat करते रहते हैं, but actually you are dealing with the pancreatitis, which is an unfavorable condition. आप ये देखें, ये pancreas आपको बिल्कुल ऐसे oblique सा crescent सा नजर आता है. ये head है इसका, ये body है और ये tail है. Somebody has measured them. लेकिन अल्ट्रासाउंड पे आपको ये pancreas बिल्कुल liver के ecotexture जैसा ही नजर आता है. CT पे you can see this very well formed homogeneous pancreas आपको नजर आता है entirely up to the splenic hilum जहाँ पे tail नजर आ रही है. And if you compare it with the pancreatitis, आप ये देखें
बिल्कुल, you can only see part of enhancing head and body. ये सारा का सारा आप देखें नेक्रोसिस हुआ हुआ. This is all in Asser sac. ये सब इसके biliary pancreatitis की complications. और ये emergency है. These patients should straight away be sent to tertiary care setting. Gallstone और बिल्कुल ये भी उसी तरह का pymetus है causing pancreatitis. Another instance you can see कि जी pancreas सारा का सारा replaced हो गया with necrosis. All pancreas is gone. सिर्फ थोड़ा सा part आपको ये नजर आ रहा है. This is all pancreatic necrosis. Potentially fatal condition, and the patient should be in hospital at this time. एक CT severity index होता है, ये हम calculate करते हैं. This is an index to tell you 1 to 10 इसके scale है कि जिसके ऊपर आप बताते हैं कि जी अगर हम आपको टेलीफोन पर भी बताएं कि जी the patient has a severity index of 8, which is mean कि जी ये बहुत ही fatal condition. So this is always helpful and handy. ये आपके लिए this is a good information for physicians. Pseudocyst, ये देखें कितनी बड़ी सारी pseudocyst, और इसको endoscopically स्टमक में ड्रेन करना चाहिए, और वी कैन ऑलवेज पुट एन एक्सटर्नल कैथेटर, आप इसको ड्रेन कर सकते हैं. Chronic pancreatitis, you can see this calcification within the parenchyma. सारा pancreas has shrunk कर गया है, small atrophy हो गया. So these are all sequelae of pancreatitis. Patient always come to you with intractable pain, क्योंकि यहाँ पे सीधे गैंग्लियन होता है, उसको इरिटेट करता रहता है. तो ये बड़ी debilitating condition है. Something about benign hepatic lesions. Simple cysts liver में, they are very common. ये बड़ी common आपको ultrasound reports में नजर आएंगी. इनको आपने कुछ नहीं करना, just leave them as such. They don't do anything. Unless they are multiple, large, they become huge. जिनकी de-roofing चाहिए, तो de-roofing के लिए आपको you have to send them to relevant person जो उसकी de-roof करे, और फिर ये abscess, right upper chondrial pain, fever, raised CRPs, TLC बहुत ज़्यादा है, और जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो you get this infection. ये सारी abscess बनी हुई है, CT और ये अल्ट्रासाउंड images. Hydrated disease, you can see ultrasound images में daughter cysts आपको ऐसे नजर आती हैं. थोड़ा सा अगर unattentive रहे hydrated तो इसकी wall calcified हो जाती है. और there is another CT image जिसमें आपको endo और rectal cysts ये नजर आ रही हैं, जिसको आप water lily sign भी कहते हैं. So these are all classical hydrated disease. ये भी आपको आमतौर पे नजर आते हैं. Then usually ask the patient कि जी आपके घर में कोई pet तो नहीं है, कोई इस तरह से चीज़ तो नहीं है which has caused this hydrated disease. आप ये देखें, ये CT है, this is MRI. आप ये देखें, इसमें हमें इस तरह से नज़र आ रहा था, MRI में आपको और ज़्यादा cysts और daughter cysts अच्छी नज़र आ रही है. You can always drain them. Serology कराएं. Hydrated usually don't put needle inside, लेकिन जो abscesses हैं उनको आप बड़ी आसानी से image guidance में हम you can drain them. Abscess has to be drained surgically or otherwise. ये needle है, put the needle inside and you just take it out as much as you can. Hemangiomas are not uncommon, और आपको ये अक्सर आपके रिपोर्ट्स में नजर आते होंगे कि जी ecogenic nodule है और ये just leave them as such. ये ऐसा लगता है कि जैसे मेटास्टेसिस हैं, लेकिन एक्चुअली these are multiple hemangiomas. आप इनको कुछ ना करें, छोड़ दें. Just keep these patients on follow. Don't do anything to them. CT पे कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है इसका, जो हम देखते हैं, जिस पे हम we find out कि जी ये hemangioma है, and just label it and leave it as such. Don't do anything. MR pictures हैं उसी तरह, एक there is a particular sequence जिसकी वजह से हम we find hemangiomas.
अनलेस कि हीमेंजियोमास आर लार्ज इनफ, आप ये देखें कि राइट लोब पूरा का पूरा हीमेंजियोमा ने ऑक्यूपाई कर लिया। लुक एट दिस हीमेंजियोमा, ये एक नॉर्मल लिवर का टिश्यू रह गया, सिर्फ इतना सारा, इट हैज टेकन द होल ऑफ राइट लोब। These are called giant hemangiomas, और ये giant hemangiomas are always problematic। ये इसका hepatic capsule को stretch करता जाएगा और ये पेन करता जाएगा। Very occasionally this can rupture as well। तो these are the candidates for hepatic resection या otherwise liver transplant के लिए, क्योंकि इसका liver reserve देखिए आप बिल्कुल थोड़ा सा रह गया पीछे। अगर हम इसको पूरे को निकाल दें तो ये डिकम्पनसेट कर रहा है। सो बी वेयर विद जाइंट हीमेंजियोमास, दे आर प्रॉब्लमेटिक। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस अ वेरी कॉमन कंप्लेंट इन योर क्लिनिक्स। बिलियरी स्टोन्स बड़ी कॉमन सी चीज़ है। गॉल ब्लैडर, ये सीबीडी है, ये ब्लैक वाली लीनियर, यू कैन सी दिस स्टोन, नास्टी स्टोन सिटिंग इनसाइड। मल्टीपल स्टोन्स इन सीबीडी causing obstructive jaundice or can cause potentially biliary pancreatitis, so be aware with this thing। इसके साथ आपने बिल्कुल इस पेशेंट को क्लिनिक्स में डील नहीं करना, they have to be sent to hospitals। इनकी प्रॉपर ERCPs हों, these stones should be, एक ट्रॉल करके स्टोन्स को निकाला जाए, if required स्टेंटिंग कर दीजिए और फिर आप सर्जन के हवाले करें फॉर पॉसिबल कोलिसिस्टेक्टमी। ये MRCP है। MRCP रेडियोलॉजी में एक लफ्ज़ है, तो ये MRCP वो फिजिशियंस वाला MRCP नहीं है। अगर आपको तो ये जिस तरह कोलेंजियोग्राम होता है, इसी तरह हम MR में कोलेंजियोग्राम्स करते हैं। तो आप ये देखें, ये CBD है जिसमें आपको ये ब्लैक ब्लैक चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिग्नल वॉइड्स, ये सारे स्टोन पड़े हुए हैं CBD में। गॉल ब्लैडर स्टोन पड़ा हुआ है, ये CBD है इसकी, ये एक स्टोन पड़ा हुआ है, अनदर स्टोन इनसाइड। MR is very handy। आप पेशेंट को लटाएं and it will give you this picture। आप ये देखें, एक स्टोन बिल्कुल नीचे डिस्टल CBD में पड़ा हुआ है। Look at these stones, signal void stones, सारे के सारे लॉज में हैं। तो you can always take help from it। एक ये देखें, ये CBD है करली सी, और ये देखें स्टोन पड़ा हुआ है, ये पेनक्रेटिक डक्ट जा रही है छोटी सी। Biliary masses which can cause obstruction। Gall bladder masses, ये gall bladder है क्योंकि आपको पता है chronic cholecystitis can lead to dysplasia, metaplesia and malignancy। तो आप ये देखेंगे स्टोन पड़ा हुआ है और ये सारा का सारा मैस सराउंडिंग द गॉल ब्लैडर, ये सारा प्राइमरी गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा है। इसमें आप देखें इंट्राल्यूमिनल मैस बन गया हुआ है, पूरा बड़ा सारा मैस और स्टोन पड़ा हुआ है अंदर। ये एक मैस बन गया और जिसने सारी के सारी प्रॉक्सिमल डायलिटेशन की है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी गॉल ब्लैडर मैसेस। ज़्यादातर ये एडिनोकार्सिनोमास हैं। इनका जब CT किया, लुक एट दिस अगली मैस इन द गॉल ब्लैडर बेड एंड द फोसा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, these are all gallbladder masses which can cause obstruction। MRCP images हैं, MRCP ज़रूरी होती हैं फॉर द सर्जन्स, ये ट्रांसप्लांट, ये हेपेटोबिलियरी सर्जन्स के लिए टू आइडेंटिफाई कि ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल पे है। क्या CHD में है, पोर्टा को पकड़ा हुआ है इसने, लेफ्ट एंड राइट डक्ट्स को पकड़ा हुआ है, या दोनों में वाई शेप गया हुआ है। ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए होती है। ये भी आप देखें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस की बहुत सारा मैस पोर्टा पे पड़ा हुआ है। ये अल्ट्रासाउंड के पिक्चर्स हैं सारी, और इसने बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है। ये हाइलर कोलेंजियो कहते हैं, कोलेंजियो कार्सिनोमा, जो डक्ट से निकलता है, पोर्टा पेटिस पे चला गया, डक्ट्स में चला गया और उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। वेरी डेबिलिटेटिंग डिजीज। MRCP में इसी तरह ही आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वेयर एक्चुअली इज द स्ट्रक्चर, उसका लेवल क्या है। हेपेटाइटिस वेरी कॉमन कंप्लेंट इन योर क्लिनिक्स। एक इसका वो है कि जी आप 180 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारी वैसे तो 22 करोड़ हम कहते हैं, लेकिन अगर हम WHO की गाइडलाइंस को लें तो दे से कि जी 180 मिलियन है आपकी पॉपुलेशन है। उसमें BNC 10%, which means 18 million, huge number of burden।
जिसमें नैश जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ओबेसिटी और फैट और वो सारा कुछ। Approximately 1 million people get end-stage liver disease, cirrhosis. They end up in cirrhosis. 1 million, 10 lakh log every year. Imagine the progress and disease pattern up. 1113 patients require liver transplants every year. This is a huge number, over 1,000 people. तो आप ये देखें कि ये डिजीज़ बर्डन कितना ज़्यादा। यू बीइंग प्राइमरी फिजिशियंस, आपके पास एक प्राइमरी बैरियर है, यू कैन एक्चुअली गाइड देम अकॉर्डिंगली। डोंट टेक हेपेटाइटिस एज कि जी कुछ नहीं है बस चलो जी चलाएं, लेकिन दिस इज़ ए वेरी वेरी सीरियस एंड इसकी बड़ी इल किस्म की प्रिकॉशंस हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्यूट हेपेटाइटिस में लिवर ऐसे ही नज़र आता है नॉर्मल सा। क्रॉनिक चेंजेस में थोड़ा सा कोर्सनिंग शुरू हो जाती है इसकी। अल्ट्रासाउंड पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ, फिर टाइम नहीं है हमारे पास। सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस इज एन एंड स्टेज हेपेटिक डिजीज। आप ये देखें सिरोसिस में इसकी सारी मार्जिन्स खराब हो गई, इरेगुलर हो गया, श्रिंक हो गया और ये साइटीज आ गई इसकी। द मोस्ट अनवांटेड थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी इन सिरोसिस। ये आप ये देखें, अनफॉर्चुनेटली this patient has developed 7 centimeter mass. सारा cirrhotic liver है, ascites है, और these are all examples of unwanted HCCs. Portal vein में कैसे invade कर जाते हैं mass? जब portal vein में invade किया तो this is an extrahepatic disease. इसको भी मैं skip करता हूँ। ये CT में different ways and means हैं how to identify HCCs. Nowadays we don't do any biopsies on these patients, so don't send these patients for biopsy. अच्छा CT जो है ना वो बिल्कुल हमने 98% patients में we have stopped doing anything. सिर्फ CT alone can be helpful. एक BCLC criteria है liver transplantation का और how to handle HCCs, उसका एक flow chart है, bar chart है, ये widely used, आज तक भी use हो रहा है। Metastases in liver, ultrasound CT, multiple hypercoic, another example of metastases. Time up हो गया, and I am left with just few slides if you allow me to do that. Yeah. Yes, sure. Liver segments are really important. Just liver segments इसलिए important है कि आप एक बिल्डिंग है, आप एक बिल्डिंग में 1000 कमरे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जी आप एजुकेशन वाले कमरे में चले जाओ, आप एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कमरा उसमें जाओ, आप कहेंगे जी जनाब कौन सी फ्लोर पे है, कौन सा कमरा है, कहाँ जाना है। सो यू हैव टू रियली प्रिसाइजली टेल समबडी कि आपने 5th फ्लोर पे 309 रूम में जाना। सो दैट इज द सिमिलर केस विद द लिवर। इनके सेगमेंट डिफाइन करना और रियली इंपॉर्टेंट कि वो लीजन कौन से उसमें था, वो सिस्ट किधर थी, वाज इट इन सेगमेंट 2, वो HCC जो डेवलप हुआ आप बता रहे हैं वो 5 में था, 4 में था, 3 में था। और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इसलिए कि सर्जिकल रिसेक्शन चाहिए। सर्जन्स दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जी आप ये हमें डिफाइन करके दें कि किस लोकेशन पे। तो ये CT में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इसी तरह ही हमने इनको डिवाइड कर दिया लेवल 8 सेगमेंट, और वो हम देख लेते हैं। ये एक रिकंस्ट्रक्शन है सेगमेंट्स की जो हम करते हैं यूजुअली कंप्यूटर पे। ये भी इसी तरह ही है। सर्जन्स हैं, ये इनको बताना पड़ता है कि जी ये इसकी वीनस एनाटमी कैसी है, ये एक्चुअल लिवर है, कैडावेरिक लिवर है ये, जिसको आप मैप किया हुआ है कि लेफ्ट हेपेटिक वेन इधर है, मिडिल है, ये राइट है। आपने अपना इंसिजन लाइन कहाँ पे देनी है। ये एक्चुअली आप CT के इमेजेस हैं और ये क्रूजर नाइफ है, आप ये देखें डॉटेड। दिस इज द एक्चुअल लिवर जिसके ऊपर सर्जन्स मार्क कर रहे हैं कि ये राइट हेपेटिक वेन ये वाला एज है, हमें इस तरह मार्क करना है इसको। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट लिवर सेगमेंट्स। ये एक वीनस एनाटमी बनाई हुई है, वीनस एनाटमी IVC है, हेपेटिक वेन्स है, ये सब CT इमेजेस हैं। ये भी हेपेटिक वेन्स की बनाई हुई हैं ब्रांचेस। पोर्टल वेन इस तरह नजर आती है आपको। सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज थिंग्स आउट ऑफ लिवर। CT वॉल्यूमेट्री दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा पड़ा हुआ। एक वॉल्यूम चाहिए आपको, कितना बड़ा होना चाहिए। लिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम क्या है।
कितना आपने करना है, कितनी रिसेक्शन करनी है, कितना ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। तो आपको पता होगा जी आपने लेफ्ट राइट लोब को कितना छोड़ना है, क्या करना है। ये इसी तरह कंप्यूटर असिस्टेड हुआ है, ये भी इसी तरह निकला है। थैंक यू वेरी मच।